Assalamualaikum ji, Zerka Tahir here. It's always difficult to introduce a project that is almost a way of life for me now. How I started, when I started, it just seems like a distant memory. But if I had to recall how this journey began, around 2013, I started an organization, not registered, I could call it a drive or whatever, sustainable intervention drive. And I would take up different projects, freelance, koi bhi community work, anything. And it had to have three pillars. It had to be sustainable, it had to be replicable, and it has to be scalable. So छोटे मोटे चीज़ें की, कभी भट्टे की औरतों के साथ, कभी किसी ऑर्फनेज में, कभी कोई लाइब्रेरी बना दी, a lot of little things here and there. And then I got acquainted with Akhuwat down the line, and frequent visits to Lahore and the walled city of Lahore Authority. So वहाँ पर this was back in 2015 कि एक अखुवत की ब्रांच बनाने का सोचा. बहुत सी ब्रांचेस हैं. सो एक ब्रांच वॉल सिटी में और गली सुरचन सिंह में ये ब्रांच है. सो सिंस इट वाज द 500th ब्रांच, सो आई कॉल्ड इट अखुवत 500. And it was here that the story begins. There was this person who is a tourism officer. और वो आए और उन्होंने कहा कि आपका एजुकेशन और बहुत सी चीज़ों से ताल्लुक़ है, सो मुझे 2 बच्चों के लिए ट्यूटर चाहिए. तो माय क्वेश्चन वाज व्हिच ग्रेड? ही सेड नो ग्रेड. आई सेड व्हाई नॉट? ही सेड दे आर नॉट इन स्कूल. एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान में बहुत से बच्चे स्कूल में नहीं हैं, नथिंग वेरी ऑड अबाउट इट. बट हिज रीज़न वाज, व्हेन आई आस्क्ड हिम कि स्कूल क्यों नहीं जाते, तो उसने कहा कि वो नाचने वाली के बच्चे हैं. एंड दैट इज़ हाउ दिस थिंग स्टार्टेड. आफ्टर दैट देयर वाज नो गोइंग बैक. आई इनिशियली वेंट टू द शाही मोहल्ला. वहाँ पे एक स्कूल बंद हो गया था विच वाज फंडेड बाय सीडर एंड ग्रुप द फ्रांस, बट इट हैड क्लोज डाउन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स. उसको रीस्टार्ट किया और उस प्रोसेस में पता चला कि बहुत से जो वहाँ के एरिया के लोग हैं और पुराने स्पेशस से मुंसलिक लोग जो थे वो मूव कर गए थे. दिस वाज प्राइमरीली ड्यूरिंग द क्रैकडाउन इन द 1980s, एंड दे मूव टू अनदर प्लेस व्हिच वाज केम टू बी नोन एज मिनी हीरा मंडी. अब एक ख्याल आया कि व्हाई डज दिस हैपन, व्हाई इज़ a place given a name, और उसके बाद वो नाम इस तरह से उसके साथ लगा दिया जाता है कि even a name like हीरा मंडी, how many people know कि हीरा सिंह के नाम पर है, वो had एक ग्रेन की मंडी थी. And then they associate with diamond and with girls and I don't know what not. And एक fantasize कर लिया हुआ है, ये सोचे बगैर कि उस इलाके में आम लोग भी रहते हैं और लोग भी हैं वहाँ पे, बल्कि ज़्यादा अब तो दूसरे लोग हैं जिनका ताल्लुक़ इस पेशे से नहीं है, लेकिन क्योंकि एक नाम दे दिया गया है, एक वो लेबल लगा दिया गया है, तो सारों को उसी में लेते हैं. तो ख्याल ये आया कि सिर्फ ये बच्चे जो एक्चुअली ब्रॉथल्स में पले बड़े हैं या जिनका ताल्लुक़ डायरेक्टली इस पेशे से है, उनके ख़ानदान का, वो इफ़ेक्ट नहीं होते. पूरी कम्युनिटी इफ़ेक्ट होती है, हर एक वहाँ पे इफ़ेक्ट होता है. एंड वी हैव टू वर्क टू, जैसे एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ विच इज़ रिक्लेमिंग नेबरहुड्स. बेसिकली एक एरिया जो कि एक अच्छा इलाका होता था, जहाँ पे एक एजुकेटेड क्लास रहती थी, वहाँ पे कुछ ऐसे लोग आए तो वो बदल क्यों गया, और क्या हम उसको रिवर्स कर सकते हैं? Can we take it back to its original form? That was the question that we had, and this was answered by a young girl जो आलिमा का कोर्स कर रही थी, मैट्रिक किया हुआ है और यहाँ पे बच्चियों को पढ़ाने आती हैं, उसमें हर किस्म के बच्चे बच्चियाँ हैं. She said to me, मैंने पूछा कि बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको यहाँ पे आने में और पढ़ाने में? तो उसने बड़े आराम से मुझे कहा, दिस वाज इन द बिगिनिंग, अब तो सारा वो चेंज ही हो गया है, नाउ यू नो इट्स अ वेरी हेल्दी नेबरहुड. शी सेड समथिंग टू मी एंड शी सेड कि
जहाँ पे बुरे लोग हों, अगर वहाँ अच्छे लोग नहीं आएंगे तो बुराई ख़त्म कैसे होगी? शी डिडंट से बुरे लोग ख़त्म कैसे होंगे, शी सेड बुराई ख़त्म कैसे होगी. So taking our cue from that, we decided कि हम एक सिस्टम शुरू करें कम्युनल हब का, which is more of a community uplift program. बहुत से लोग कहते हैं आपने स्कूल खोला है, स्कूल बहुत है, स्कूल मज़ीद खोलने की ज़रूरत नहीं है, हेल्थ सेंटर्स बहुत हैं, वो मज़ीद खोलने की ज़रूरत नहीं है. हमारा मेन फोकस is the child. And it is always said that, it takes a community to raise a child. But I ask, what does it take to raise that community? I believe it's all of us. That's what it takes to raise that community. We have to get together and kind of, एक process reclaiming neighborhoods का है और एक process reclaiming childhood का है. शुरू में कभी जो मुझसे कोई पूछता था कि आप यहाँ पे क्या करते हैं, तो हम कहते थे कि we give them 6 hours of childhood per day, 6 days a week. We believe every child has got rights. A child has got a right to an identity, to health, to education, to skills, but every child has a right to a childhood. Every child has rights जो कुछ intangible rights होते हैं. The right to be human, the right to tell the truth, the right to be honest. I honestly believe that we infringe on those rights. There was a little girl जिसने शुरू में मैं उससे कुछ सवाल पूछ रही थी, तो एक सवाल के जवाब ने उसमें मेरी माँ की तरफ देखा और कहा कि मैंने इनको सच बताना है कि झूठ. And in that instance I realized that we teach them to lie. The naturalness, the instinctive behavior of a child is curbed by us adults. So जहाँ पे हमने बच्चों पे काम करना था, वहाँ पे हमने community पे भी काम करना था, because decision makers adults हैं, very irresponsible adults, all of us, but yes, we are ultimately responsible for these children. So जो multiple hub system था, the way it developed was कि एक हमने academic hub develop किया, जिसमें basically open for the whole community, और उसमें हम बच्चों को grade level proficiency पे लेके जाके we mainstream them. The health hub is the same way. It is also connected with the health services that are provided by the government, which honestly are very good. And we have drug tests होते हैं, hepatitis tests होते हैं, HIV testing होती है. Then we have liaison with mental health institutes, Mayo Hospital Child Psychiatric Department, drug rehab centers. So एक community service provide की जाती है. Al Ihsan Eye Hospital provide free eye operations and services. That vehicle comes every 2 weeks. Chuktai Labs provides free testing. There's so much that is provided by others. So it is more of an ecosystem where we develop that entire infrastructure that is essential for a community, and that's essential ultimately for the child, because the child will always remain our focus. उसके बाद वहाँ पे we discovered कि पानी ठीक नहीं है, so we set up a water filtration plant so you can get clean water for the entire community. उससे ये भी हुआ कि और subsidized ration provide किए. What happened with that was कि एकदम से इन बच्चों के लिए और जो दूसरी हर किस्म की कम्युनिटी थी उसके लिए एक रिस्पेक्ट भी हो गया फॉर द रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी. सो देन वी डिड नॉट कन्फाइन आवरसेल्व्स कि जी वो बच्चे जिनका ताल्लुक उन फैमिली से था जो ट्रैफिकिंग या डांसिंग या ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व थी. इट वाज ओपन फॉर ऑल. Yes, we have children जो इन फैमिली से आते हैं. We have children जो drug addicts हैं, जिनके घर में कुछ gamblers हैं, bookies हैं, crime में involved हैं. But then we get children who are just from regular families and they're all together. Like there is no, शायद हमारे ज़हनों में है कि there are compartments these people would not mix. But they live in communities and they're more well adjusted than we are. Sometimes, I feel that we are more marginalized. They are in the center stage of humanity. I mean, we are on the periphery. So I really can't use the word marginalized for them. And in addition to that, we started a craft hub. Again, the entire community can come and learn any kinds of skills there. Then we have a food hub, where the food is provided to mothers and children, and food is also provided, by the way, to animals. We've got a cow who comes every other day. 2 बकरियां भी आती हैं, एक अपने तोते को लेके आती है, उसके लिए खाना लेके जाती है. So I guess it's the only langar that is
for all kinds. We serve plant food there as well. So फिर वो सेंटर बना. उसके बाद we thought के स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं, so we started a special needs hub. We thought के बहुत closed घर है, it's a concrete jungle, so we started a plantation hub. मतलब जो भी जहन में आता है ना कि बस इस कम्युनिटी में ये होना चाहिए. So basically it's a participatory development model where we have taken up a union council. We owned it, we sit there, we become part of the community, we do not judge them, we do not dictate to them, we work with them. Yes, there are some cases where we have really stretched ourselves, like we have taken brothels on, and ये भी जिस तरह वो भट्टे की वहाँ पे bonded labor होता था, ये brothels का भी एक bonded labor है. और वो हमने women who had been at times sold into this field, or they have been conditioned into doing this, and we paid off the money that they owed, and in a way freed them from that bondage. उनके बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, and they are doing mashallah very well. We have a young girl who actually told her grandmother that she's not going to learn to dance and she's not going to go to Dubai, but she's going to learn to go into the field of IT, and she's going to be a black belt in martial arts. Another of our success stories basically is that most of the boys and even girls over there have tried gateway drugs. You'd be surprised that even young girls and boys as young as 9 or 10 can roll joints and have tried some kind of drug or other, even alcohol. वहाँ पे बहुत सी ऐसी लड़कियाँ हैं, teenagers हैं, who cut themselves or who inject themselves. लड़के तो करते ही हैं. If you look at, I call it our strip of misery, वो जो पूरी वो सड़क जाती है जहाँ पे सारे government offices भी हैं, bridge के नीचे, you will see so many drug addicts. और वो इतने ज़्यादा हो रहे हैं और हम देखते भी नहीं हैं. I mean, you literally at times see arms on the road where the guys on the pavement, or a leg stretched out there, and people just skirting their way. And now, because we become conscious, I guess the brain responds to it. So I can actually see the cuts. I can actually see when needles have been injected. So उसका एक बहुत interesting और आसान सा हल हमें मिला. जो बच्चे ये शुरू करते हैं, उन्हीं से पूछ के, उन्हीं से we are constantly learning from them. The kids are the best teachers in the world. So उन्होंने जब सारी चीज़ें हमें बताई तो पता चला कि हमें कुछ लाइफ स्टाइल चेंजेस करने हैं. आपको मैं बताऊं, जब शुरू में यहाँ पे शुरू किया था तो there was this mother who came, तो उसने कहा कि एनी सवेरे तो मैं स्कूल नहीं भेज सकती. तो एनी सवेरे वॉज एक्चुअली 12 बजे तब लगता था, अब तो सुबह 7 बजे होता है, बट एट दैट टाइम इट वॉज 12 o'clock when the community work and everything would start. And he said कि एनी सवेरे तो नहीं, मैंने कहा अच्छा चलो तुसी 2 बजे भेज देना. नहीं, वो भी बड़ी सवेरे है. So we kind of negotiated to 3 o'clock, which she kind of agreed. But we started martial arts in the morning on the rooftops. अब और वहाँ पे grounds नहीं है, जगह नहीं है, but rooftops हैं. So we started martial arts, and these kids gave up trying drugs. And I thought, God, it's so simple. Provide them with healthy activity and they will not take to drugs. There must be a reason why. हम क्या करते हैं कि जब वो बन गया एडिक्ट, उसके बाद हम उसके ऊपर बहुत सा पैसा खर्च करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं. लाइक मेयो हॉस्पिटल और हॉस्पिटल्स वहाँ पे भरी हुई हैं वार्ड्स. रिलैप्स रेट क्या है? 99%. आई मीन एट टाइम्स आई थिंक इट्स 100%. सो बेसिकली हम करते क्या है कि एक अनहेल्दी बंदे को जो ड्रग्स में इन्वॉल्व है उसको हम एक इंस्टीट्यूट में रखते हैं, उसको हम हेल्दी सब्जेक्ट जब वो हो जाता है तो वापस हम उसी फील्ड में भेज देते हैं जहाँ पे ही स्टार्ट्स नॉट जस्ट इंजेक्टिंग हिमसेल्फ बट इंजेक्टिंग अदर्स एज वेल. बिकॉज द वे द ड्रग डीलर्स वर्क इज़ दैट जब सब कुछ वो बंदा बेच चुका होता है, कर चुका होता है, तो देन दे एक्चुअली से कि 1-2 ड्रग एडिक्ट्स ले आओ, इसके ऊपर लगा दो तो तुम्हारी फ्री होगी. सो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है. हम
when people say कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो मैं कहती हूँ बेशक ना करें आप. There's no need to invest in these children. और ये एक क्लोज्ड सर्कल में ही रहेंगे ना, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा. लेकिन एक चीज़ याद रखिए, डिज़ीज़ और क्राइम कंटेन्ड नहीं रहेगी. ये ग्रो करेगी, ये आपके घरों तक भी पहुँचेगी अगर पहुँच नहीं चुकी, बिकॉज ड्रग्स इज़ नॉट अ प्रॉब्लम दैट इज़ कंटेन्ड, डिजीज़ इज़ नॉट अ प्रॉब्लम दैट इज़ कंटेन्ड. सो इन्वेस्ट, इफ़ यू कांट इन्वेस्ट इन दीज चिल्ड्रन, इफ़ वी कांट इन्वेस्ट इन दीज चिल्ड्रन, then we should invest in our hospitals. We should invest in our drug rehab centers. We should maybe also invest in making our graveyards bigger. I mean, I don't want to sound too morbid, but that's the way the whole thing is headed. So the whole idea of Communal Hub is basically a community development model where you work with the community through a process of dialogue. You engage them, and there's something that we say at the Communal Hub, that it is about channels and choices, no closures. So it's not an option not to do anything. There's another thing, by the way, that we are going to be starting more aggressively, which we've already been doing, and that is every child a citizen. We do not realize how many children do not have an ID card, where every time on 14th August, on 23rd March, they're waving flags, and I'm like, oh my God, what did we do? We did not give them an identity. And they are the most enthusiastic when they sing the songs of Pakistan. It is, they have been born here, they've been raised here, they live here, they deserve an identity. And that is their basic right. We are signatories of the Convention on the Rights of a Child. And Article 8 guarantees the right to an identity. That is something that it should be a no-brainer. They should be given this. We have almost done photo ID cards of more than 500 children and adults in this area. One should also understand that this is also a deterrent for child labor. It is also a deterrent for trafficking. When girls are sent, their ID card would not say that they are 14 years old, they are 13 years old. It would claim that they are 18, 20, 21. And that's why when you have got fake documents, you can still trace it, you can still do something about it. What if you have an original document with fake information and you've done nothing about it? Recently, we were able to save a girl, maybe, I don't know, maybe we saved even more, because they were going to get her passport made, and when they realized that we had registered her, they could not do it because no promoter would get into, getting fake documents. So the bottom line is that we have to take care of our children. Every species does that. Every species takes care of its young. Why should we be any different? Thank you.